तो अभी तक हमने अगर आइस के पोर्टल्स की बात करें या वो आइस में जो अवेलेबल गुईज हैं हम उनकी बात करें, तो वो हमने गुई देखी है आइस की, एक इसका यूजर इंटरफेस है विच इज ऑफ पैन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन नोड। ये तो इसका मेन यूजर इंटरफेस है। फिर इसी आइस सिस्टम का हमने एक इंटरफेस देखा है विच इज हॉटस्पॉट कैटेगरी। ये भी एक यूजर इंटरफेस है एंड यूजर इज इंटरेक्टिंग विद इट। दिस वाज अ काइंड ऑफ पोर्टल जिसके जरिए आइस में ही तरमीम की गई है बैकएंड पे, उसका मैक रीड किया गया और उसको एलोकेट किया गया गेस्ट एंड पॉइंट्स में। फिर हमने एक पोर्टल देखा है सेल्फ रजिस्टर्ड। This is another user interface, and this user interface is also making changes behind the scenes. Then we have seen another portal which is sponsored guest portal. This is another kind of user interface, और इससे यूजर इंटरेक्ट करके अपने आप को ऑथेंटिकेट कराता है आइस में। Now we are going to talk about another type of user interface which is there hosted on ICE, and this user interface is called the sponsor portal. इस sponsor portal को जो शख्स एक्सेस करेगा, he is basically a sponsor person. ये कौन है? ये रिसेप्शनिस्ट है। ये जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन नोड का पोर्टल है, ये कौन खोलता है? दिस पोर्टल इज एक्सेस्ड बाय आइस एडमिन। दिस इज आइस एडमिन्स पोर्टल। इन पोर्टल्स को कौन यूज करता है? दीज पोर्टल्स आर यूज्ड बाय एंड यूजर्स। इन पोर्टल्स को एंड यूजर यूज करते हैं या गेस्ट्स यूज करते हैं। सो ये जो पोर्टल है विच इज स्पॉन्सर पोर्टल, इस पोर्टल की अब हम बात करने जा रहे हैं। दिस पोर्टल इज रिक्वायर्ड फॉर दीज काइंड्स ऑफ गेस्ट्स। इसने यहां पर यूजर क्रिएट करना है जिसको ये गेस्ट यूज करेंगे, स्पॉन्सर्ड गेस्ट पोर्टल वाले। So how to enable this sponsor portal and provide this access to the receptionist so that receptionist can create users in ICE only for this type of connectivity. This sponsor will not be allowed to touch any other component of ICE system. तो sponsor portal पे बात करने लगे। इधर अगर आप देखिए, हम वहाँ गेस्ट एक्सेस में पोर्टल्स एंड कंपोनेंट्स में ही खड़े हैं अभी तक, और पोर्टल एंड कंपोनेंट्स ही मेजर एरिया है गेस्ट सर्विसेज का। इसमें आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी ग्रुप्स, एक्सटर्नल आईडी सोर्सेज, ये वही एरियाज हैं जिनको हम पहले टच करके आए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज द सेम एरिया जिसको हमने पहले भी एक्सप्लोर किया हुआ है। Network devices, this is the same area from where we add devices. So most of the information available here is just a duplication of those configurational areas which we have already explored. इसका जो indigenous area है वो है ही portals and components, उसी में हम अभी हैं। इसमें अब देखिए आपको ये sponsor area नजर आ रहा है। This is for sponsors and this is for guests. Sponsor portal पर क्लिक करें अगर हम, तो हमारे पास आइस में by default एक sponsor portal available है। This is that portal which is being shown in red color here, the portal for receptionist. This portal is there, created already. If we open this portal, through this portal,
we are able to do what? That will be shown. So we are in a sponsor portal page, portal settings. This portal is not available on 8443 port. Instead, it is there on 8445 port. This portal, how can we access this portal? Here we have the portal URL. If I right click on it and copy link address, I got the portal address. यानी मुझे being a receptionist अगर किसी पोर्टल को ओपन करना है, स्पॉन्सर पोर्टल को, तो ये वो एड्रेस है जिसको मुझे ओपन करना है. अच्छा, अब ये एड्रेस इतना स्मार्ट कैसे हुआ? ये एड्रेस यूजुअली इतना स्मार्ट नहीं होता. So let me remove that configuration from here and we will do it once again. Let's copy the link address. Changes are not saved yet. Let's wait for it. अच्छा, बाय द टाइम ये सेव होता है, हम अगली चीज़ें देख लेते हैं. देखिए, जिस तरह इस पोर्टल का काम सिर्फ और सिर्फ आने वाले गेस्ट्स को एंटरटेन करना है, उनका यूज़र बना के, ये इसके अलावा इस पोर्टल का और कोई काम नहीं होगा. लेकिन इस पोर्टल की अपनी भी तो ऑथेंटिकेशन होगी. इस पोर्टल में बजाते खुद लॉगिन होने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए. सो ये जो पोर्टल है, स्पॉन्सर पोर्टल, इसमें लॉगिन होने का जो यूजर नेम है वो स्पॉन्सर यूजर कहलाता है. स्पॉन्सर यूजर. तो स्पॉन्सर यूजर को कहाँ से ऑथेंटिकेट किया जाएगा? उसका जो सीक्वेंस है वो स्पॉन्सर पोर्टल सीक्वेंस है. आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंसेस में, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किए हुए हैं. So our portal configuration is saved. सो स्पॉन्सर पोर्टल सीक्वेंस जो है, ये एक ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस है जो पहले किस डीबी को देखना है, फिर किस डीबी स्टोर को देखना है, ये उसकी तरतीब वजह करता है. एंड वी नो इट. सो इसकी जो ऑथेंटिकेशन का फ्लो है, दैट इज डिफरेंट. सो वंस यू लॉग इनटू दिस पोर्टल, यू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड, you will be authenticated using this portal sequence. So the sponsor portal sequence is as such कि पहले इंटरनल यूजर्स देखे जाएंगे, फिर एडी को देखा जाएगा. तो इसका मतलब है कि जो स्पॉन्सर पोर्टल है उस पर जिसने लॉगिन होना है, वो यूजर जो स्पॉन्सर पोर्टल में लॉगिन होना है, वो आईस एडमिन बनाएगा. और आईस एडमिन उस यूजर को बना करके थ्रू द पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन नोड GUI उसको राइट्स देगा उस यूजर को कि वो स्पॉन्सर पोर्टल पे लॉगिन हो सके. तो यूजर हमें क्रिएट करना है इंटरनल यूजर्स में या एडी पे. ठीक है जी, यूजर हम वहां क्रिएट कर देंगे और द पोर्टल इज नाउ एक्सेसिबल. हम इसकी यूआरएल कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू ओपन इट्स यूआरएल. तो आप देखें, इट्स अ लॉन्ग वियर्ड यूआरएल बाय डिफॉल्ट. You have to type in the IP of PSN, then 8445 port, and this is the portal address which you need to remember as a receptionist to open sponsor portal page. So if I click on it, I am landing on a sponsor portal.
which is this one, and purpose of this portal is to create users for this guest portal. But in order to enter into this portal, I need a username and password. That username and password has to be created in ISE. Okay. Let's talk about sponsor groups. Sponsor groups are the groups जिनमें आपको user create करना है. So once you add a user in this group, that user will be allowed to create login in sponsor portal and create users subsequently for the guest portals. So अब हम चलते हैं वर्क सेंटर में और आइडेंटिटीज में. Let's try to create a user for the sponsor portal. Let's go through this route. So we will create a user here and let's call it sponsor admin. Username is sponsor admin. Password is ICT1234 star. ICT1234 star. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इस यूजर को मेंबर बनाएंगे या तो ऑल अकाउंट्स का स्पॉन्सर ग्रुप्स, या तो ऑल अकाउंट्स का या ग्रुप अकाउंट्स का या ओन अकाउंट्स का. So these groups are pre-created in ISE for sponsor portal management. तो हम इस यूजर को all accounts में डाल देते हैं sponsor.admin. So as we create this user, we should be able to log in through this user in sponsor portal. The user is there and it is part of all accounts default. तो ये जो sponsor का portal है, अब हम ये sponsor admin से login करेंगे. So once we log into this portal, we will be given with an interface that is a limited interface, and through that interface you can create accounts. अब ये वो पेज है जो हर वक्त रिसेप्शनिस्ट के सामने ओपन है. if you talk about hospitality industry, एक होटल है, उसकी रिसेप्शनिस्ट जो है उसके पीसी के ऊपर ये पोर्टल खुला रहेगा, एंड व्हेनेवर द गेस्ट कम्स इन, जैसे रूम चेक इन किया जाएगा इस स्पॉन्सर पोर्टल से उसके लिए यूजर नेम वगैरह क्रिएट करके उसको प्रिंट दे दिया जाएगा थ्रू दिस स्पॉन्सर पोर्टल. हम नहीं चाहते कि वो यूजर सेल्फ रजिस्टर करे. वी वांट हिम टू गो थ्रू अ स्पॉन्सर पर्सन. सो अब ये जो स्पॉन्सर पर्सन है ये कौन कौन से गेस्ट बना सकता है. ये कॉन्ट्रैक्टर टाइप का बना सकता है, ये डेली टाइप का बना सकता है, ये वीकली टाइप का बना सकता है. ये ऑल अकाउंट्स ग्रुप का मेंबर होने की वजह से इस यूजर के पास ये राइट्स हैं. सो हम इसमें अब एक गेस्ट बना देते हैं. वी कॉल इट स्पॉन्सर्ड गेस्ट यूजर नेम, और this is being picked as fishy username. So s guest sponsor guest, और हम इसको ईमेल एड्रेस दे देते हैं sponsored.guest@gmail.com. फोन नंबर if you want we can. अच्छा जी, अब हम बीइंग अ स्पॉन्सर इसको कितनी ड्यूरेशन की एक्सेस देना चाहते हैं. वी वांट टू गिव 1 day एक्सेस ओनली. सो एस, और हम इसको टाइप कॉन्ट्रैक्टर डेली या वीकली बनाना चाहते हैं, दैट इज ऑन टॉप ऑफ इट. सो दिस इज
type of a contractor user, but we want to give him 1 day access. And location is Lahore. We create this account. So as we create this account, हमें सिस्टम जो है वो कुछ डिटेल्स देगा. बीइंग अ स्पॉन्सर ये डिटेल्स हमें मिली हैं. ये वो डिटेल्स हैं जो हमें गेस्ट को दे देनी है ताकि वो अपने पोर्टल पे लॉगिन हो सके. सो दीज डिटेल्स वी विल कॉपी और परहैप्स वी विल हैव अ प्रिंटर जिसके अंदर हम इन डिटेल्स को प्रिंट करके अपने गेस्ट को दे देंगे. और अगर हमने एसएमएस वगैरह इंटीग्रेट की हो तो उस गेस्ट को एसएमएस भी जा सकती है. So this is the username and this is the password of the guest, and guest is waiting on his machine for log on. गेस्ट के पास कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं था, तो अब जब हमने उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लिया तो उस इंफॉर्मेशन की बिना पे अब देखते हैं वो गेस्ट लॉगिन होता है. सो एस गेस्ट and this is the password. So acceptable use policy present हो गई, we accept it, we press continue, so we are able to open internet. देखते हैं पीछे flow क्या रहा. So if you look at the flow, the user is now given guest access and he is authorized for VLAN 140 और S guest is the user जिसकी बेस के ऊपर उसकी authentication हुई है. So let's go back to the configuration point. So this is what we have done. हमने sponsor portal को खोला sponsor URL से. अब जो sponsor URL है ये अगर आप fancy करना चाहें तो what you can do is here in this field of fully qualified domain name you can put sponsor.ict-trainings.local और आपका जो कंपनी DNS है उसके अंदर आपको इस A रिकॉर्ड के एवज अपनी ICE PSN का IP रिजॉल्व करवाना है. So after that you can just write sponsor.ict-trainings.local and this URL will land you on the sponsor portal page. तो अभी जो ये weird URL की बिना पर एक स्पॉन्सर अपना काम कर रहा है, ये एक फैंसी URL के जरिए भी ये काम हो सकता है. तो उसके लिए हम अपने स्पॉन्सर पोर्टल पे जाके इस चीज को एनेबल कर देते हैं. सो लेट्स कम बैक टू द स्पॉन्सर पोर्टल. और यहाँ पर हम लिख देते हैं sponsor.ict-trainings.local. ये हमारी डोमेन है और इस डोमेन में sponsor.ict-trainings.local का हमने ए रिकॉर्ड बना रखा है. सो लेट्स सेव इट. So once you make this change, after that the portal URL will no more be this. Actually तो यही होगी, but आप यूज कर सकते हैं sponsor.ict-trainings.local a रिकॉर्ड को. आप जस्ट ये टाइप करेंगे, it will redirect automatically to that actual URL which was quite long and complex. So let's wait for the changes are applied. तो अब हम लिखते हैं sponsor.ict-trainings.local. Let's copy it from there. Let me check if we have the DNS thing available. It is resolving to 192.168.1.171.
So here we go. No, this is the main GUI. We should be able to land on the sponsor portal. Let's check if the changes are saved. So using this change, if the DNS is appropriately set, we will eventually land on the same URL. It will take you to the same URL. और बाकी जो यूजर हमें इस पोर्टल में लॉगिन होने के लिए चाहिए, वो यूजर हमने आइस की यूजर इंटरफेस ही बनाया. ऑल वी मेड श्योर वाज कि वो ऑल अकाउंट्स या गेस्ट या ओन अकाउंट्स का मेंबर हो. So this user was able to log in the sponsor portal. जैसे हम sponsor portal में login हुए, we were able to see this type of screen. और ये हम login इस sponsor portal की GUI में यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद हुए. तो यहाँ से हमने यूजर क्रिएट किए और यूजर क्रिएट करने के बाद हमारी वो जो ऑथराइजेशन पॉलिसी है, दैट इज दी सेम पॉलिसी. और स्पॉन्सर गेस्ट पोर्टल जो है वो हमने यूज किया है फॉर एंड यूजर रीडायरेक्शन. So and we could also use guest flow. Let's see if the changes are saved. Sponsored. This is a typo. So let's save it again. So you see, we wrote sponsor.ict-trainings.local. Instead, it automatically redirected to the actual URL. तो ये हमारे जो रिसेप्शनिस्ट है उसके लिए नाउ दिस इज एन इजी टास्क कि उसको पता है कि sponsor.ict-trainings.local पर हिट करना है एंड आई विल बी प्रेजेंटेड विद स्पॉन्सर पोर्टल. इंस्टेड कि वो ये पूरी यूआरएल याद रखे, तो वो आइस ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम रीडायरेक्ट कर देगा. यू जस्ट नीड टू राइट दिस. सो FQDN दे लेना चाहिए हमें स्पॉन्सर पोर्टल में, सो दैट आवर रिसेप्शनिस्ट कैन रिमेंबर द URL. So if we look at the flow behind, that was almost the same. कि हमारा यूजर पहले WLAN रीडायरेक्ट पे आया और उसके बाद वो गेस्ट एक्सेस की तरफ चला गया. So user came on guest redirect first. This time this guest redirect did push a sponsored portal instead of self-sponsored portal. जो यहाँ पे URL push की गई, this URL redirection URL was not of a self-sponsored portal. It was of a sponsored portal. तो उसके ऊपर जब यूजर लैंड हुआ तो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो यूजर नेम और पासवर्ड दे, और उसके लिए वो डिपेंडेंट था रिसेप्शनिस्ट पे. सो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्सर्ड पोर्टल फ्लो.
A sponsor will create a user for the guest to log in. Rest, it is all controlled through PAN, authorization profile, and authorization. So we are done with the hotspot guest flow, self-registered guest flow, and sponsored guest flow.